டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் குறித்து அதன் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் விளக்கமளித்து வருகிறார். அது நேரலை காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்த்து வருகிறோம். Largely because of the Bharat Jodo Yatra and the Bharat Jodo Nyaya Yatra that he designed and led. Both these yatras that reflected his own thinking and personality were historic turning points in our nation's politics and instilled hope and confidence in lakhs of our workers and crores of our voters. Sri Rahul Gandhi's election campaign was a single-minded, sharp and pointed, and more than any other individual, it was the who made the protection of our Republic Constitution the central issue in the 2024 elections. The Panchi Guarantee program, which resonated so very powerfully in the election campaign, was the outcome of Rahulji's yatra, in which he listened to the fears, concerns and aspirations of all peoples, especially youth, women, farmers, workers, Dalits, Adivasis, OBCs and minorities. The CWC deeply appreciate the contribution made by the PCC President, CLP leaders, office bearers of AICC, PCCs and DCCs, block presidents, booth level agents and each and every one of this great and mighty organization. Of course, the CWC warmly congratulates the Congress candidates who have won and have become such a big force in the Lok Sabha. The CWC recognized the brave fight put up by the candidates who lost, and while sharing their disappointment, extends all good wishes to them as they continue their political activities in the party. The CWC thanks the India parties for fighting so well in different states. India parties in UP, West Bengal, Tamil Nadu and Maharashtra especially performed exceedingly well. The 18th Lok Sabha will be influenced hugely by the India parties. The CWC would be failing in its duty if it did not take note of the disappointing performance of the Indian National Congress in some states in the midst of the overall revival and rejuvenation. Urgent steps should and will be taken, address the shortcomings in the state where the party had every reason to hope for a better result, but where that expectation was not fulfilled. Finally, the CWC, while expressing the happiness in the Congress turnaround, also acknowledges that many challenges remain. We have recovered and revived, no doubt but we still have a long way to go to occupy the preeminent position that party has once held in the nation's political life. The people of India have spoken. The Congress has been given another chance. It is now up to us to build on it. We must and we will. This is the solemn resolve of this meeting of the CWC. The Indian National Congress will continue to be steadfast in its commitment to social and economic justice and safeguarding the Constitution and its principles, value and provisions. Another resolution we had passed unanimously. CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. Because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agnivir-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. Thank you. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। ये जो रेजोल्यूशन पारित हुआ है उसकी कॉपी आपको अंग्रेजी और हिंदी में आपको मिल गया होगा विस्तार से। अभी जो वेणुगोपाल जी ने पढ़ा है, मैं संक्षिप्त में कह दूं कि इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी
को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। और राहुल जी ने आज बैठक में यही दोहराया कि जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का अभियान हमने चलाया था, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने प्रचार किया था, जाति जनगणना को लेकर जो हमने बार बार कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने इसका जिक्र किया, किसान न्याय को लेकर जो हमने गारंटियां दी हैं, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। ये सब हमारे रेजोल्यूशन में शामिल किया गया है, जिसकी कॉपी आपको मिल गई होगी। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो वेणुगोपाल जी उसका जवाब देंगे। ये जो हाँ जी, बोलिए। டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் தொடர்பாக அதன் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்தார். அப்போது வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி என தெரிவித்தார். மேலும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராகுல் காந்தியை நியமிப்பது தொடர்பாக ஒருமனதாக இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது என்றும் அவர் கூறினார். மேலும் தோல்வியடைந்த இடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய இருப்பதாகவும் அப்போது கே.சி. வேணுகோபால் செய்தியாளர்களிடையே விளக்கமளித்தார். ராகுல் காந்தியை மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக நியமிப்பது குறித்து ஒருமனதாக செயற்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.